Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, my dear students. गुड मॉर्निंग सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। Uh, what type of question do you want to ask? Please put up. सर जो आप क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो हाँ बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग खुद से कर सकते हैं शॉर्ट्स बनाकर। हाँ हाँ. Why not? तो कर सकते हैं। Yes, definitely. ओके सर, थैंक यू। Thank you. My dear students, yesterday I was discussing about perfect, present perfect tense and past perfect tense. Today we have to talk about the future perfect tense. Future perfect tense. Dear my students, the recognition of Hindi sentences. In the last of verb of Hindi sentences, if we find चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, then the sentences are known as future perfect tense. It's dependent on you. If you want, you can write some Hindi examples in your copy. Otherwise, there is no problem. Let me write the formation of positive sentences. At the very first, you will have to use subject, then will, oblique shall, then have, then V3, then object. This is for positive. This formation is especially for positive sentences of future perfect tense. My dear students, I have already told you the recognition of Hindi sentences, but how we can recognize an English sentence which is in future perfect tense. अगर एक सेंटेंस अंग्रेजी का फ्यूचर परफेक्ट का है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? My dear students, as the structure or formation has been written, you can recognize the sentences. That's why let me write some examples as I shall have written a letter. The second, we shall have completed the work. She will have reached at the station. Ria will have broken or cut, will have cut the cake on her birthday. My dear students, I have written some sentences here. Some sentences here as the first sentence I have written, I shall have written, written, I shall have written a letter. These type of sentences, if you find during your study, you must understand that the given sentence has relation with future perfect tense.
because this is the main recognition of all the sentences of future perfect tense. In the sentence, you can find shall or will according to subject. With I and we, you have to use shall, and with other subjects, you will have to use will. Shall, then have, then third सर form of the verb. रियल हैव सर की बात क्या है? Cut, C-U-T, cut, C-U-T, cut. Because third form of cut is already cut. Cut, cut, cut. If you find in a sentence shall or will, then have, then third form of the verb, then third form of the verb, third form of the verb, third form of the verb, such type of sentences can be recognized as future perfect tense. My dear students, in our conversation, such type of sentences are not used properly, or many times. If you are conversing, if you are talking to someone, you will have to speak very maximum. If you are talking 1 hour, if you are conversing 1 hour to anyone, I think you will have to speak not more than one sentence of future perfect tense. But there is a confusion. Most of the students, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, इसका नेगेटिव जब वो बनाते हैं तब उसमें क्या होता है, आप जरा उसको देखें. माय डियर्स, इफ यू आर गोइंग टू राइट अ नेगेटिव फॉर्मेशन, कीप इन योर माइंड at the very first you will or shall, subject, then will oblique shall, then because one day I told you, if you find more than one verb, helping verb in a sentence, you will have to keep or put the word not for negative just after first helping verb. Here in the sentence, this is one and this is second. Here in the sentence, in the formation, two verbs, both are helping, and you will have to use the word not just after first helping, means here not, then have, then V3, then object. My dear students, अब हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन एकदम तैयार है. अब इस पर सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई लेट मी राइट सम एग्जांपल्स एज whom he will have solved all the questions. Will have not, sorry, will have not, sorry, will not have, because this is negative sentences. Second, I shall have cooked. I shall, sorry, I shall not have cooked food myself. It means sentences are enough, my dear students. If you find such type of sentences, यदि आपको अंग्रेजी का कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें shall, उसके बाद not, उसके बाद have, then क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देती है, it means if you find a sentence shall, then not, shall or will, then not, then have, then V3 means third form of the verb, easily you can recognize that the given sentence is in future perfect tense but in negative mode. My dear students,
you can write minimum 10 sentences, minimum 10 sentences in of future perfect tense in your copy to yourself. You can search out from your book. You can take the help of Google. But this is the formation of sentences of future perfect tense. And now, simple word interrogative. If we talk about the simple word interrogative, keep in your mind, only you will have to displace will and shall. So the very first you will have to have will oblique shall, then subject, then have, then V3, then object as lost question mark. This is the formation of simple word interrogative. Means if you find a sentence which is given on the basis of the given formation, the sentences, the question will be related to future perfect tense. As let me write some example as will you have gone to Delhi tomorrow? Second, shall I have talked him? My dear students, if you find such type of sentences, easily you can recognize that the given sentence has relation with the future perfect tense. And if you want to put question, then you will have to put or keep question words as who, whom, whose, how, when, where in the starting before will and shall. So my dear students, if you find any type of doubt in this sentence, I can make you clear, I can clear your doubt if you want. Otherwise, I'll be ready to be proceed towards perfect continuous tense. Just I'm asking to my students if you have any problem. Otherwise, I'm going to write perfect continuous. Perfect continuous. At the very first, present perfect continuous. Present, then past, then future. My dear students, present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Now we have to learn these three tenses. What are the recognitions of these three tenses and how the sentences come? So, my dear students, at the very first, we are talking about present perfect continuous. Present perfect continuous, the recognition, the Hindi recognition of present perfect continuous, if you find in the last of verb of Hindi sentences, if you find raha hai, rahi hai, rahe hain, same as present continuous tense, but the time of action is given, then the sentence is known as present perfect continuous tense. I can make you clear the difference between present continuous and present perfect continuous. In present continuous, we find in the last of verb of in these sentences, raha hai, rahi hai, rahe hain. But in perfect continuous, we find raha hai, rahi hai, rahe hain, but the time of action is given as time of action.
क्रिया के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। मैं स्कूल जा रहा हूं, या मैं ग्रामर पढ़ रही हूं, मैं ग्रामर पढ़ रही हूं। इस सेंटेंस को अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके आते हैं, कब से आप पढ़ रही हो ये उसमें दिया रहता है। सुबह से, दोपहर से, रात से, भोर से, कल से, परसों से, 5 मिनट से, 2 मिनट से, 10 मिनट से, एज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से समय उसमें दिया रहता है। द रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, पहले तीनों का मैं एक ही साथ बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इफ वी फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं, but the time of action is given, then the sentence is known as present perfect continuous tense. Second, past perfect continuous. My dear students, in the last of verb of Hindi sentences, if you find रहा था, रही थी, रहे थे, then the sentences are known as past perfect continuous tense and future perfect continuous in the last of verb of Hindi sentences. If you find चुका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, then sentences are known as future perfect continuous tense. Now, let me write the prior formation of these sentences. At the very first, subject, then has, oblique, have, then been, then before, then object, since, for, plus time. And for past, subject plus had, then been, then before, then object, since, for, plus time. And for future, subject, will, shall, plus have, plus been, plus before, plus object, since, for, plus time. Now students, I have written three formations, three positive formations of these three tenses, present, past and future. We have to know the differences between three tenses and the similarities between three tenses. At the very first, I am going to tell you the similarities, मतलब जो समानता है, subject would be here, subject would be here and subject is here also. Means तीनों प्रकार के, तीनों टेंस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की उपस्थिति होगी। Now, been is here, been is here and been is here. इन तीनों टेंसेस में been का प्रयोग होता है। And V4, keep in your mind, V4 means ing form of the verb are used in two types of tenses. Present means continuous group and perfect continuous group. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, and present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous tense. My darling students, that's why V4 is here, V4 is here, and V4 is here. इन तीनों टेंसेस में ing फॉर्म का प्रयोग होता है। Object is here, object is here, and object is here. Since, for plus time, you can find
since for plus time in these three tenses. since for time ये हमेशा अंत में आता है, सेंटेंस के अंत में. Now what is the, Sir, why use since or for? please, what do you want bete? Sir, Please. why we use since for? Since for, because the time of action is given in the sentence. That's why to present time of action we have to use since oblique for then time. Okay. Sir, example. Oh, have patience. I'll write more examples. यहां पर आप केवल इतना सीखो कि इन तीनों टेंसेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं बेटे. अंतर सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रेजेंट में हैज और हैव आता है, पास्ट में हैड आता है, और विल शैल के बाद हैव, विल शैल हैव आता है फ्यूचर में. बेटे, if you can stop yourself, if you can mute yourself, then I can. मिस साधना, खुशबू निषाद, मिस आनवी, प्लीज बेटे म्यूट योरसेल्फ. आप अपने को म्यूट कर लो. खुशबू निषाद. Yes, sir. Hey my dear students, why are you talking? If you, let me mute you. Mute is everyone. Yes. Now, at the very first, we have to talk about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. My dear students, I have written the formation: subject, then has oblique have, then been, then V3, then before, then object since for plus time. As before starting the example, let me tell you the use of since and for. Since and for. In what condition you have to use since, and in what condition you have to use for. Bete, since is called point of time. Point of time. And for is called period of time. Period of time. It is called निश्चित समय, and it is called अनिश्चित समय. निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना होता है, और अनिश्चित समय के लिए आपको फा का प्रयोग करना होता है. माय डियर्स, आपको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है, तो आप इतनी बात जरूर याद रखें. रिमेंबर द गिवन थिंग, सिंस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम. देन इन व्हाट कंडीशन, what is period of time and what is point of time? किस परिस्थिति में आप सिंस का प्रयोग करेंगे? मॉर्निंग, evening. It will be better that you can write in your copy. Evening, noon, night, midnight. And
how it can be used since morning, since evening, since noon, since night, since midnight. Now what is the Hindi meaning? Most of the students uh, want to know the Hindi. My dears, since morning का मतलब सुबह से, since evening means शाम से, since noon दोपहर से, since night रात से, since midnight रात्रि आधी रात से. तो अब हम देखते हैं एज और सिंस का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है? 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM, 12 PM. क्या मतलब है इसका? 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से. Then before the name of days, Sunday, since Sunday, since Monday, since Tuesday, since Wednesday, since Thursday, since Friday, since Saturday. मतलब रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से. इसके पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे. उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर. जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से. और आपको किसी ऐसे तरीके के सेंटेंस का प्रयोग करना हो, जैसे आपको कहना हो देश में मार्च से लॉकडाउन चल रहा है. कीप इन योर माइंड अ वेरी गुड एग्जांपल आई एम गिविंग यू, बट ऑफ हिंदी. देश में या पूरे देश में मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कहेंगे लॉकडाउन has been running since March in whole country. And before the name of year 1991, since 1991, since 1992, since 1993, since 1994, since 2001, since 2002, since 1985. मतलब 1991 से, 1992 से, 1993 से, 1994 से, 1995 से, 1996 से, 1997 से, 1998 से, 1999 से. आप कभी कभी, हम और आप कभी कभी इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं. 1947 से आज तक
since 1947 till today. Since का प्रयोग हम बिफोर द नेम ऑफ ईयर भी हम लोग कर सकते हैं, वर्ष के नाम के पहले। उसके बाद ये इन सबके पहले बिफोर सिंस का प्रयोग आप करेंगे। अब हम फार की बात करते हैं। एज आई थिंक कि आप इसको लिख चुके होंगे। जस्ट लेट मी आस्क यू इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू नो कि जो हमने आपको बताया कि आपको ठीक से समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No. No, sir. Okay. Now, let me tell you the use of for. For period of time. For का यूज किन परिस्थितियों में करते हैं? While, एक मोमेंट को याद दिलाऊं, let me remind you a special moment when you write an application, you write a line in your application. I have been suffering from fever for 2 days. Yes, am I right? आप ऐसा लिखते हो? Yes, sir. Yes. For. Yes, sir. Yes. 1 day. For 1 day. For 2 days. For 3 days. For 4 days. आप ऐसे जो है लिखते हैं। तो उस स्थिति में भी आपको फॉर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। और 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 12, 15 मिनट से, 20 मिनट से, आधे घंटे से, तो देखिए 1 मिनट। मैं 1 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 1 मिनट। मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर हाफ एन आवर। घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर आवर्स। तो 1 मिनट से जब टाइम की बात आती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो आपको उस स्थिति में फार का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है आपको? बोलो। अब मंथ की बात करें। Yes, sir. मंथ की, Yes, तो sir. मंथ का नाम नहीं, जैसे 1 महीने से, 2 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने से, कुछ इस तरीके का जब सेंटेंस में आता है तो उसके लिए फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, For 3 months, for 4 months, Yes. for 5 months. यस यस यस, यही सही है। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली विद ईयर्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, From फॉर year, 4 for ईयर, For 3 5 years, for 4 years. years, for 5 years, for 6 years, for 7 years, for 8 years, for 9 years. For 9 Yes. years. लेकिन बेटे जब कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल आपके सामने आता है कि बरसों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, Several years. फॉर ईयर्स, बरसों several से, years. महीनों से, फॉर मंथ्स, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अच्छा, सेंचुरी के पहले भी फॉर का प्रयोग होता है। 200 वर्षों से हमारा देश गुलाम रह रहा है, तो वहां पर भी फॉर 2 centuries, फॉर 1 century, फॉर 3 centuries, फॉर 4 centuries आपको करना होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। Yes, तो Yes, sir. यस,
तो अंग्रेजी सेंटेंसेस की पहचान कैसी होगी, आपको दो चार मैं दिखाऊं। एज, हैज एंड हैव, इनका प्रयोग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एज, आई हैव बीन सिंगिंग, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 2018. I have been singing since 2018. Next, he has been reading since morning. Next, you have been suffering from fever, suffering from fever since last night. Next, Anvi has been learning English for 1 hour. My dear students, if you find such type of sentences, the sentences would be related to present perfect continuous tense. प्यारे बच्चों, अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस मिलते हैं तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे इस तरीके के फॉर्मेशन वाले, जिसमें हैज बीन और हैव बीन के बाद क्रिया की चौथी फॉर्म आती हो, ऐसे सेंटेंसेस और अंत में सिंस फॉर का आना अति आवश्यक है। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझे जाते हैं। It's enough for today, my dear students. The time is about to be over. That's why I say to all of you, have a good day. See you. Thank you, sir. Next day. Thank you, my dear. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. खत्म कर